Hello everyone. Good morning. I hope you all can hear me and see me. Not visible. Okay. Just give me a second. I hope I'm visible now. You are audible, you are visible. Okay. Great. Good morning everyone. Good morning. Thanks a lot for your patience. Morning session नहीं कर पाया था मैं join. The trade is still running जो हमने सुबह दिया था. Just give me a second. So I was just confirming with our expert कि कितना time लगेगा तो she is joining us in a minute. So this is an exclusive session on IPOs and जैसा मैंने last time कहा था कि we are starting our series once again the IPO spotlight and for all the important IPOs we'll have these kind of sessions with our fundamental research team and today Sneha Podar ma'am will be joining us. Ma'am, I have sent you a request to join the stage. Please accept that. Ma'am, I hope you can hear me. Yeah, Anuj, hi. Hi, good morning, ma'am. Good morning. Thanks a lot to the other experts who are helping out. So, good morning, everyone. My name is Anuj Sharma, and I'm really happy to welcome our expert, Ms. Neha Poddar, who is a VP and part of the fundamental research team. आपने उनको पहले भी देखा होगा in our Stockholm sessions talking about the IPOs. She has been, a crucial part of our journey. We started a morning series with her, if you all remember, right? And it's been a while that we connected, so we thought of starting our IPO series once again. Today we are here for our Waaree Energy IPO. So, ma'am, I guess we are all set. I hope you are also happy to be back with us. And Yeah, guys, feel free to a drop. very good morning to everyone. We And good morning, Anuj. And it's really great actually to be back. It's been quite a while actually. I think we did a couple of months back a session and post that. It's really good to be connected to the investors once again. I guess people are, reading your Q&A sessions everywhere. I can see I read your Q&A sessions with Divya Marathi. I guess you are popular, but it's great to have you back, ma'am. So I guess we won't take much time. People are eagerly waiting here. So let's start, about the IPO. I guess we'll start with the most basic question: ki why, Waaree's decision to go live is important, and why does this happen? Like the most basic question. Okay. So see, basically, Waaree Energies is in a very vibrant sector, which is solar module segment, and it has been this industry has been in buzz for quite some time. A lot of focus is being made by the government, and for past, I think, year or more than so, the solar energy or be it wind energy. So basically, the entire renewable energy space has been buzzing. So this is definitely a right time for companies present in this space to actually capitalize on it, and probably with this motto in mind, the company has come to the primary market, and they actually require funds as well for their future expansion plans. So uh, raising funds rather than completely through a debt route. It makes sense to come to the IPO market, which is actually very vibrant, and they can really raise good amount of money at very good valuations. So this is the probably the main reason why the company has come to the investors.
मैम ये तो आपने कंपनी फ्रंट से बताया है, राइट? व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट व्हाई शुड पीपल लाइक अस अप्लाई फॉर इट? लाइक व्हाट इज इट व्हिच इज अट्रैक्टिव फॉर अस दैट वी शुड गो अहेड विद दिस आईपीओ? ओके, फॉर इन्वेस्टर्स, आई मीन, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सो जैसा मैंने कहा कि दिस सेक्टर हैज बीन बजिंग, बहुत गवर्नमेंट का फोकस है, काफी पीएलआई स्कीम्स भी अनाउंस हुई है, एंड मैंने वी कैन सी इट लाइक डे टू डे जो एनर्जी एक जो डेफिशिएंसी है एनर्जी पूरे स्पेस में, सो देयर इज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट व्हिच इज कमिंग, बी इट हमारा डे टू डे इंटरनेट यूसेज के थ्रू या एआई यूसेज के थ्रू, या in general because of the heat waves that we are witnessing. So the demand for energy is tremendous. Now केवल thermal power से वो demand meet नहीं हो सकती है, so that's why renewable energy segment पे काफी focus government कर रही है, and this is the reason why हर company जो कि पहले thermal space में थी, even they have like entered into this space because ये space काफी promising है. एक शॉर्टर ड्यूरेशन साइकिल की प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होता है कंपेयर टू दी थर्मल प्रोजेक्ट्स. सो इट मेक्स सेंस कि हर कंपनी जो कि पावर स्पेस में दे एंटर इनटू दिस. एंड अब अगर हम वारी की बात करें तो वारी इज एंटायरली इनटू सोलर एनर्जी स्पेस. तो डेफिनेटली मैंने अब इन्वेस्टर्स के लिए प्लेट पे क्या है, ये एक बूमिंग सेक्टर है जो कि नेक्स्ट 5 years 10 years, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी की डिमांड आगे आने वाले टाइम्स में और बढ़नी ही है. सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट यूसेज, बिकॉज ऑफ इतने मैंने इलेक्ट्रॉनिक का पेनिट्रेशन इंडिया में तो अभी जो स्टार्ट ही हुआ है, सो एक नए स्तर पे जाएगा 5 years 10 years डाउन द लाइन. सो बी इट डेटा सेंटर, बी इट इलेक्ट्रॉनिक यूसेज, आप कुछ भी आप देख लो, हर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. So energy is the buzzword for next, at least it's a very good strong investment theme for next 5 to 10 years. So us theme ko, if we keep that in mind, then renewable energy is a much better and in terms of risk reward compared to thermal energy space. तो वारी एनर्जी भी वो उस स्पेस में फिट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्पेस, एंड बिकॉज काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में है, तो इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर उन्हें लग जाता है इस आईपीओ में अलॉटमेंट, तो डेफिनेटली मैंने अप्लाई करना चाहिए और होल्ड करके रखना चाहिए. इनफैक्ट मेरी तो सलाह ये रहेगी. मैम आपने ओवरऑल सेक्टर के बारे में क्विक ब्रीफ दिया, बट हाउ इज दिस गोना इम्पैक्ट द अदर कंपनीज इन द सेम स्पेस, फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट विल बी द ग्रोथ और व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ इट? See, competition will always be there, but having said that, as I mentioned, the demand is huge. So the demand supply mismatch is there. So there's actually the industry demand is so high that it can accommodate almost like all the competitors. So no, I mean ऐसा नहीं कि competition के कारण probably like बहुत ज़्यादा price war types issues आएंगे, because at least अभी next 5 to 10 years तो demand ही meet हो जाए, सब players मिलके demand meet कर ले, वही बहुत बड़ी बात है. So there's ample growth opportunity for each and every player who is present in this space. I guess ma'am we are getting some questions. Ma'am listing gains के लिए apply कर सकते हैं या avoid करें? लिस्टिंग गेन्स के लिए कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है. सो इट्स कमिंग एट अराउंड 27 times मैंने Q1 FY25 के नंबर्स को अगर हम एनालाइज करते तो इट्स कमिंग एट अराउंड 27 times PE, which actually leaves a lot for the investors on the table. तो लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा. इनफैक्ट मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मैंने दे सकता है आपको लंबे समय में, स्पेशली अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स देखोगे और जो अपॉर्चुनिटी जो हमें सामने दिख रही है, तो एक ये अच्छी स्टोरी बनती है जिसे होल्ड करके रखना चाहिए. In fact, that was my next question कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे या फिर लिस्टिंग गेन्स पे? That was my next question. So अगर ट्रेडर है तो ऑब्वियसली वो लिस्टिंग गेन्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो काफी टाइम बाद एक अच्छी कंपनी आई है जो कि हर पैरामीटर से
बहुत ही अच्छे से फिट बैठे कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। मैंने फाइनेंशियल पैरामीटर्स बोल लीजिए या प्रोमोटर का क्वालिटी पर्सपेक्टिव से बात कर लो, या इन टर्म्स ऑफ रिस्क भी एज सच कंपनी में कोई बहुत ज्यादा एक्सटर्नल रिस्क जो हर कंपनी के लिए है फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव या रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली वो रिस्क रहेगी। बट उसके अलावा एज सच कंपनी इंटरनल रिस्क बहुत लिमिटेड है कंपनी में। सो मेरी सलाह रहेगी कि इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। मैम आपने काफी बार मेंशन किया कि वी शुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, काफी ग्रोथ होगा, काफी प्रॉफिट होगा। सो कैन यू प्लीज शेयर सम प्लान्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स ऑफ द कंपनी, कि ऐसा क्या वो प्लान कर रहे हैं आफ्टर दिस आईपीओ दैट लॉन्ग टर्म इट्स गोना प्रॉफिट बोथ द कंपनी एज वेल एज द इन्वेस्टर्स? ओके, सो सी बेसिकली जो कंपनी है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, इनफैक्ट इट्स द लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल मेकिंग कंपनी। सो ये सोलर के जो मॉड्यूल्स है कंपनी बनाती है, एंड लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया में भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। सो इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कुछ रफली 13 गीगावाट की कैपेसिटी है जो कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। सो बेसिकली इनके न्यू प्लान्स आ रहे उड़ीसा में, गुजरात में एंड इवन इन यूएस, और इससे कंपनी की पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सो इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी है। सो जहां फॉरवर्ड में वो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स में भी कैपेसिटी एक्सपैंड करी, एट द सेम टाइम वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी कंपनी जा रही है। सो इट प्लान्स टू मेक सेल्स, जो कि अभी सेल्स वो नहीं बना रही थी, अभी केवल जो पूरे सोलर पैनल में जो मॉड्यूल लगता है, सो मॉड्यूल बेसिकली 50% ऑफ द कॉस्ट होता है जो कि कंपनी बना रही है, बट एट द सेम टाइम अब वो सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी एंटर कर रही है। सो दैट्स वन स्पेस जिससे कि काफी ऑपरेशनल लेवरेज कंपनी को मिलेगा, एंड सो उससे उसकी पोजिशनिंग इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में भी एंटर कर रही है। सो ग्रीन हाइड्रोजन इज अनदर बूमिंग सेक्टर व्हिच इज कमिंग अप एनर्जी स्पेस में। काफी कंपनीज ने अनाउंस की है इस स्पेस में एंट्री पॉइंट्स, बट सो फार अभी कुछ भी ऑन द ग्राउंड नहीं है, एंड सेम स्टैंड्स फॉर दिस कंपनी एज वेल। कंपनी ने फोरे अनाउंस किया है, प्रॉब्ली 2 years 3 years डाउन द लाइन वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली फ्रुक्टिफाई होगा, बट फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम एक्सपोर्ट की भी बात करें तो मोर देन 50% कंपनी एक्सपोर्ट करती है। 20 कंट्रीज में इनके एक्सपोर्ट्स होते हैं। सो बाहर का डिमांड है, और इंडिया में ऑफ लेट ये डिमांड काफी जोरों शोरों से ग्रो करने लगा है। सो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, बोथ द मार्केट्स आर बजिंग एक्चुअली। I guess we have some messages. My best performing MF is from you, ma'am. Thanks a lot. Hi, good morning. For retail category, how many lots bid should be better to get the IPO? Okay, so for retail category, it's so one bid lot is about 9 shares, and आप 2 लाख तक retail category में apply कर सकते हो। So if you are like really positive on this company, I would suggest आप HNI category में करो। So HNI category में आप 2 लाख से 5 लाख तक अप्लाई कर पाओगे। So वहाँ पे probability लगने की काफी हाई हो जाती compared to the retail category. Okay. And the next question we have is, ma'am, can you please tell something about the GMP percentage? GMP के बारे में मैं नहीं बात करूंगी, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वैल्यूएशंस जैसा मैंने कहा काफी रीजनेबल है। सो आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर हम पेयर्स की बात करें जैसे कि प्रीमियर इंजन्स है, तो प्रीमियर एनर्जीज की जो वैल्यूएशन है इट्स कमिंग एट अराउंड 125 टाइम, मैंने जो ऑलरेडी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी वो 125 टाइम्स पी पे है, while at the same time जो वेप्सॉल एनर्जी करके कंपनी है वो 60 इट्स ट्रेडिंग एट 667 टाइम्स पी। तो बाकी कंपनीज काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, वही वारी एनर्जीज उनके कंपैरिजन में काफी रीजनेबल है। सो एंड प्लस अगर हम इन टर्म्स ऑफ बाकी फाइनेंशियल्स की भी बात करें, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड ऑल, तो ग्रोथ वगैरह सब सिमिलर है। सो काफी मैंने अगर हम सब पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, तो लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए।
Ma'am, can you, like, this is my question, can you share some light on the current financials of the company? ओके, सो अगर हम लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो रफली कंपनी ने 100% रेवेन्यू ग्रोथ किया है ओवर FY 22 to 24. करंटली जो उसकी रेवेन्यू है दैट्स रफली अराउंड 11,000 crores की रेवेन्यू है, जो कि 2 years back it was just around 3,000 crores. So 3,000 से almost 11,400 crores पे कंपनी पहुंच गई है. So which is like almost 3 times the revenue. एंड अगर उसकी हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने 6 times अपनी कैपेसिटी को ग्रो की थी, एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड ये जो हम शार्प रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, सो वो उसी का नतीजा है. एंड मार्जिन्स भी काफी इम्प्रूव हुए कंपनी के, काफी हेल्दी मार्जिन्स है अराउंड 17-18%, विच इज रियली एफिशिएंट. एंड अगर हम पैट ग्रोथ की बात करें तो पैट विच वाज जस्ट अराउंड 80 crores FY 22 में, that has reached to about 1,200 crores. So ये sharp growth possible हो पाया because of the strong demand, and company ने उस demand को actually anticipate करते हुए अपने capacity को rapidly increase किया है. So that actually led to this sharp growth which we are witnessing. And जो future और जो expansion plans है, so that will drive the future growth for the company. इनफैक्ट अनुज, मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी, इनके रिटर्न रेशियोज भी काफी हेल्दी है. सो 20% प्लस रिटर्न रेशियोज है, जो कि नॉर्मली हम अच्छे कंपनीज में यही कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको इवेल्युएट करते हैं. डेट इक्विटी हार्डली कुछ है, सो वेरी मिनिमल डेट इन द बुक्स. रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, मार्जिन्स काफी अच्छे हैं. सो जो मैं आपको बोल रही थी कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, प्लस प्रोमोटर बैकग्राउंड काफी सॉलिड है. सो मैंने मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी आपको मिल रही है अच्छे वैल्यूएशन पे, जो कि बहुत रेयर हमें आईपीओ मार्केट में देखने को मिलता है. नॉर्मली कंपनीज काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आती है, सो वी हार्डली हैव एनीथिंग लेफ्ट ऑन द टेबल, बट कंपनी ने काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अपने आईपीओ को लाया है. सो लिस्टिंग गेन्स तो हमें देखने को मिलेगा ही. लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करूंगी सर. So, ma'am, I'm just going through the questions. Just give me a second. I guess specifically to this IPO, we don't have any more questions. I personally don't have any more questions. I have more clarity, and I guess आपकी team report तो publish करती है where we can get everything that has been published and sent to all the clients over mail. Right. So we don't have any questions. Before we take some general queries around the IPO, do you have any last closing points for the Waaree Energies IPO? Anything you would like to mention to our members? I think I'll just, I've already said that it's a market leader in the solar module segment, and जो company backward and forward integration कर रही है, that will go in a, it will help the company to actually take it to the next level. And the entire renewable sector is quite buzzing. There's a risk which is always there from the China, that the China may dump the in the history also they have they have been doing the dumping of the solar modules in India, but this time because government को काफी push करना है इस sector को, so they have come out with this कि companies have to go with make in India modules only, and because of this policy ये companies वारी जैसी companies benefit कर रही है. And I believe क्योंकि government का focus है इस sector पे, तो ये measure government बना के रखेगी and anti dumping duties लगे रहेंगे. So China जैसे countries यहाँ पे dump नहीं कर पाएंगे, and in India that will help the company capitalize on the domestic demand. And even in America, the American government has imposed the anti-dumping duty in case of China. So वहाँ पे भी made in America modules के लिए काफी strong impetus government ने in fact government push करी है वहाँ पे. So even in America there is a strong demand which is emerging, and Waaree is a strong player over there. In fact वहाँ पे इनके localized plants भी है, and they are expanding capacity over there. So demand from both the countries will help the company grow tremendously. So guys, we will be taking some questions. Feel free to share it in the comment, and we will be happy to take it up.
Meanwhile, we have some generic questions, ma'am. I guess the first one is कि जब कोई IPO आता है, whenever there's a new IPO, how can we analyze it? Like, what are the pointers we should keep in mind while analyzing an IPO? Okay. See, first of all, you'll have to actually understand वो किस industry को cater कर रही है, and how so that industry, how is the scenario in that industry, whether it's a booming industry or it's a highly penetrated industry. So you'll have to really understand the industry landscape and then the positioning of the company. So how if the company is one of the top three, say, manufacturer in that industry, and if it's a booming industry, so it really makes a good investment point. At the same time, you'll have to analyze the its positioning vis-a-vis compared to the its competitors, how they are so what are their expansion plans and how are they planning to grow ahead. So the peer analysis, at the same time industry analysis, both is required in order to understand whether the company is investable or not. And at the same time, किस वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है. सो वैल्यूएशन रियली मैटर्स, बिकॉज नॉर्मली आईपीओ के टाइम पे कंपनीज काफी हाई वैल्यूएशन पे आती है, तो हम देखते हैं कि आईपीओ के टाइम पे वो अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी दे देती, बट आफ्टर अ पॉइंट वो वापस काफी नीचे भी आ जाती कंपनीज. सो वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, डज इट मेक सेंस फॉर दी फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव टू एंटर एट दिस स्टेज. अदरवाइज पोस्ट आईपीओ भी हम उन कंपनीज में एंटर कर सकते हैं इफ इट्स रियली lucrative. So these are the couple of things which we need to keep in mind. And utmost important is do go through the risk page. So starting में RHP में काफी सारे risk highlight किए हुए रहते हैं. So it's really important you go through that risk. So risk समझना काफी important हो जाता है, because बहुत बार companies काफी कुछ केसेस में अटकी हुई होती है, कुछ अगर so कुछ corporate governance issues भी हो सकते हैं. So if it's corporate governance issues काफी high है, so it's better to avoid those companies and not just get carried away. So risk को समझना काफी important हो जाता है. वहां से risk वाले चैप्टर से आपको काफी कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि कंपनी की पोजीशनिंग कैसे है, how much they are dependent on certain clients or certain geography, या कुछ रीजन्स में उनका कंसंट्रेशन तो नहीं है. सो जस्ट ये कपल ऑफ थिंग्स अगर आप माइंड में रखते हो तो आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो. Ma'am, do we have any other good IPOs coming up in the near future that we should keep an eye out? See, Swiggy is one IPO, then NSDL का IPO आ रहा है. So these are the IPOs which is not coming obviously immediately. Immediately तो अभी एक वारी एनर्जी ही जो हमें अच्छी लग रही है, but yeah, next year Jan Feb onwards again काफी बड़े IPOs आने start हो जाएंगे. So Swiggy, NSDL are few IPOs which we are liking, and so probably once they come, we'll analyze them, and then we'll be able to give you a better picture. But yeah, इनमें काफी traction हमें शायद देखने को मिल सकता है. And I guess, ma'am, this will be the last question. How to be sure, like, we will be getting the share allotment? I mean, maximizing the probability of getting share allotment. How can we do that? There's no formula to it. Probably you can apply to the IPO from the retail category, HNI category in multiple names. I mean, that's the only best way of doing it. Otherwise, I mean, it's pure luck. I mean, कोई इसका way out नहीं है. So multiple multiple application के through just the probability increases. That's the only way of ensuring कि हमें शायद कोई एक या दो allotment लग जाए. So I guess, ma'am, that will be all for the session. It was a very quick, rapid fire session, I feel. And it's been a while we did that. It was great having you back, ma'am. And congratulations on your promotion. I guess you have been promoted recently from AVP to VP. It's great to have, senior experts among us, and, who are connecting to retail members at the ground level and sharing the knowledge with them. Thanks a lot for that, and hope to see you again soon in one of our knowledge series, ma'am. Sure. Thank you. Thank you all for connecting.